Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 10th subject General Science. In previous video we have discussed we have proved that light bends when it travels from when light bends towards the nerve, when it travels from a rear medium to denser medium, but it bends away from the normal when the light goes from denser medium to rear medium. So ये हमने प्रूव किया था by using Snell's law of refraction, एंड जो हमने ये भी पढ़ा था कंडीशंस ऑफ नो रिफ्रैक्शन, वो भी हमने प्रूव किया था बाय यूजिंग Snell's law of refraction. जो आज का टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. या हम ग्लास स्लैब लेंगे, फिर इसको देखेंगे हम इसमें रिफ्रैक्शन जो होती हैं वो कैसे होती हैं. ठीक, दिस इज द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब. This is the glass slab made of glass. It is rectangular shaped. It has two faces like this face and this face. Light is made to fall on this face and it finally emerges from the other face. The light supports two refractions first at this face and second refraction on this face. So अब हमें यही पढ़ना है. जब दो रिफ्लेक्शंस यहाँ पर होती हैं, फिर जो फाइनली जो रे इमर्ज होती हैं वो किस डायरेक्शन में, कहाँ से होती हैं, किस डायरेक्शन में इमर्ज होती है, यानी जो इसमें डिविएशन होती है या नहीं होती हैं, या ये हमें डिस्कस करना है इस वीडियो में. एक्चुअली हम यहाँ Snell's लॉ लेंगे क्योंकि यहाँ जो रिफ्लेक्शंस होती हैं, two refractions takes place. The light suffers, the light undergoes two refractions. So हम यूज़ करेंगे Snell's law at this face and this face. फिर हम उसको कंपेयर करेंगे, देखेंगे क्या वो डिविएशन वेदर डिविएशन ऑफ लाइट टेक्स प्लेस और नॉट. फिर अगर नहीं होता है, फिर क्या लाइट को एक्चुअली क्या होता है, जो इमर्जेंट रे हैं, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, वो किस डायरेक्शन में होते हैं, यानी ये कोई एंगल आपस में बनाते हैं या नहीं, वही हमें डिस्कस करना है. ठीक, सो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब it has two faces, face 1 and face 2. सपोज हम उसको ड्रा करेंगे on this board. This is the suppose this is a glass slab. इसको हम नाम देंगे ABCD. AB is one face and CD is another face DC. ठीक, यहाँ हम इंसिडेंट रे लेंगे. Let's take this incident array. This is PQ. Q is the point of incidence. ये हम नॉर्मल ड्रा करेंगे. Let us draw the normal. इसको नाम देंगे N1 N2. यहाँ पर एंगल बनेगा I. यहाँ पर जो ये है इंटरफेस, जो ये है इंटरफेस AB. It is actually आयर गिलास का इंटरफेस है ये. This is the medium glass. ठीक, this is the medium glass. यहाँ पर जो इंसिडेंटल रे पी क्यू है, यहाँ रिफ्लेक्शन होगी, यहाँ लाइट बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल लाइक दिस, टुवर्ड्स द नॉर्मल. यहाँ एंगल बनेगा, सपोज इसको हम R1 लिखेंगे. R1 इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. पी क्यू इज इंसिडेंट रे, क्यू एस इज द रिफ्लेक्टेड रे. ठीक, क्यू एस हम यहाँ पर ड्रा करेंगे, यहाँ पर लेंगे. ठीक, क्यू एस इज द refracted ray. Again, since light goes from glass to air, it emerges finally from this face. Again, it suffers refraction at this face at S, on this face at S. So यहाँ पर हम again draw करेंगे normal, इसको हम नेम देंगे N2 N3 N4. यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको हम R2 लिखेंगे. दिस इज द इंसिडेंट एंगल in case of second refraction. यहाँ पर लाइट बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि यहाँ लाइट ट्रैवल करती है ग्लास टू एयर. दिस इज एयर अगेन, एयर गिलास एयर, यानी AB जो इंटरफेस है दैट इज इंटरफेस ऑफ एयर गिलास मीडियम. ठीक, यह जो DC जो इंटरफेस है, दिस इज द इंटरफेस ऑफ ग्लास एयर मीडियम. द पेयर ऑफ मीडियम ग्लास एयर. In first case it is air glass. So light is traveling in first case air to glass, and second reflection light travels from glass to air. So glass is denser, air is rarer. It
again suppose refraction, and this ray of light bends away from the normal like this angle, and this is the angle E. E is greater than R2. R1 is smaller than I. So here light bends towards normal, and here in this case the light bends away from the normal. S इसको हम लिखेंगे S P Q R S. P Q इसको S R ये है, this is the R S. R S is the emergent ray which emerges out of the glass slab. This is emergent ray. PQ is incident ray. QR is reflected ray in case of first refraction, but QR is also incident ray in the case of second refraction. RS is the reflected ray in the case of second refraction, or it is called the emergent ray, RS. R is angle of incidence in first refraction, R1 is angle of refraction in first refraction, R2 is angle of incidence in second refraction, E is angle of emergent or angle of refraction in second refraction. ठीक, is this okay? Yes. So हाँ, अगर यहाँ पर refraction suppose नहीं होती, जो यो आयर, these आयर गिलास, these are suppose ये एक ही मीडियम होता, तो लाइट किस डायरेक्शन में जाती, लाइट इस डायरेक्शन में जाती विदाउट एनी, लाइट इस डायरेक्शन में जाती है, इस डायरेक्शन में जाती है. ठीक, इसको हम पी एम लिखेंगे, नाम देंगे पी एम. हाँ जी ठीक. सो यह हमने लिया था, यह हमने लिया है ए बी सी डी गिलास स्लैब लेंगे, गिलास स्लैब लिया है. पी क्यू एरे ऑफ लाइट traveling in air along AB, along this AB, along PQ, along falls on the side in this AB of glass slab at Q at an angle I. As the ray is going from rarer medium to denser medium, it bends towards normal and goes like QR, and it goes along QR at angle of refraction R1. At point R on the boundary this DC, light is leaving glass slab like this glass slab and entering into air. यहाँ पर air में enter होती है. ठीक, it is moving from denser to, that is it is moving from denser medium to rarer medium. Therefore second refraction occurs at R, this is R, and the ray emerges along this direction along RS. RS is the emergent ray after suffering two reflections on passing through a rectangular glass slab. So second refraction में जो C पे होता है, BC serves as the incident ray. BC, this the BC, QR serves the incident ray. R2 जो है यहाँ पर R2 है, this is the angle of incidence in glass, and E is the angle of emergence, which is the angle of refraction in air. ठीक, अब हम अप्लाई करेंगे सिग्नल्स लॉ, यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, स्पेस पे भी अप्लाई करेंगे, स्पेस पे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू सिग्नल्स लॉ, यूजिंग सिग्नल्स लॉ at Q. So sin I, angle of incidence divided sin refraction जो R1 है, angle of R1 refract angle, that is equal to mu G divided by mu A. इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में बोलेंगे, नाम देंगे यूजिंग Snell's law at और here यहाँ बनेगा ये sin एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है, और sin एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो आयर में है जो E है, इमरजेंट एंगल sin R2, दैट इज इक्वल टू म्यू A डिवाइड बाई म्यू, जो इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे sin E डिवाइड बाई sin R2 इक्वल टू म्यू G डिवाइड बाई म्यू A. सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड हम कंपेयर करेंगे, आप यहाँ म्यू जी डिवाइड म्यू ए, म्यू जी डिवाइड म्यू ए. सो आर एच एस ऑफ फर्स्ट एंड आर एच एस ऑफ सेकंड आर इक्वल, सो एल एच एस will be also equal sin I divided by sin
R1 equal to sine R2 divided by sine E, sorry, sine E divided by sine R2 चूँकि जो R1 R2 हैं they are equal, they are alternate angle, these are alternate interior angle, these are equal because N1 N2 and N3 and 4 these are parallel like this, these are parallel and this is the transversal, QR is the transversal. तो यहाँ पर एंगल जो बनता है R1, यहाँ पर R2, these are equal, so these are equal, R1 R2 are equal, R1 is equal to R2, which means that sin R1 is equal to sin R2, so ये कैंसिल होगा, sin R1 sin R2 they are equal, they cancel, sin I equal to sin E, so sin I divided sin E, इसका मतलब है आयत E, I and E बराबर होगा, so I is E, ऐसे लिख करेंगे I equal to E. So जो एंगल है emergent angle and incident angle they are equal. What does this mean? This means that angle of emergence E at second boundary DC of glass slab ABCD is equal to the angle of incidence I, angle of incidence I at post boundary AB of glass slab. Hence जो ये है जो ये है RS and PQ, they are parallel to each other. PQ and RS, they are parallel to each other. So light emerges from rectangular glass slab like this. RS emerges glass slab in the direction parallel to that in which it entered the glass slab. So PQ is parallel to RS. Light enters in the glass slab in the form of PQ. PQ is incident ray and it emerges in the form of RS, this emergent ray, and these come out as these are parallel to each other. These are parallel to each other. It means that so now so a ray of light undergoes the ray of light when it enters the glass slab. It suffers two refractions on passing through a rectangular glass slab. The light emerges out in the direction parallel to the direction of incidental light, that is your net deviation, and net deviation suffered by the ray into refractions is 0. So firstly is 0 because they are parallel to each other. This is because the bending of ray of light at IR glass, this IR glass interface is equal. यहाँ पर bend towards होता है, यहाँ पर bend away from that. These are equal and opposite, hence no deviation of light, no bending of ray of no deviation of light takes place. So net this net जो है deviation that is suffered by light, that is 0. So but जो emergent ray है this RS, it is slightly shifted. आप यहाँ से यहाँ पर देख सकते हैं, it is shifted towards sideways shifted. It is shifted sideways from the direction of the original incident path, original incident ray. Sorry, PM. This is the lateral displacement. This is called X. So this lateral displacement, and thus light suffers a displacement, lateral displacement, sideways shift, that is lateral displacement. This sideways shift or lateral displacement depends upon the refractive index of the medium and thickness of the glass slab. These are the factors which are responsible for this for the lateral shift of this emergent ray. So this is about the refraction through a glass slab, and thanks.